Hi everyone. So hope everyone is doing very well. My every student is doing their well for their studies. So this side Rahul. So today I came with a new video for CBSE student of class 10th. Okay. So this is the pair of linear equation of two variables NCERT solution. Okay, of new book. Okay, not a previous book. This is a new book that is for 2025 and 26 student. Okay, so in this video we will deal with all the three exercise of this NCERT book, okay, of pair of linear equation. So be stay tuned from the starting to end of the video. You can see how we can deal with each of the question and what are the techniques we are using, so you can follow the same techniques for the solution. Okay, and soon we will bring you the other books solution also. Okay, and for the better updates or better solution of our PDF and everything, you can follow our Telegram channel. You can see here scan codes are the given, so you can follow that one, so you will get all the book solutions. Okay, and apart from that, any books, soft copy or PDF you want, so our team will provide you. Apart from that, you can see the WhatsApp scan code is there, so you can follow, so you can get regular updates of our videos, and also our social media handles are given, so please follow us and help us to support. And most important, subscribe our channel and share with your friends, so we can reach a maximum student, and also we can reach maximum student and we can help them. Okay, so by this note, let me start this video that is especially for class 10. Again I'm repeating, class 10 CBSE ongoing 2025 to 26 student. Okay, the chapter name is pair of linear equation of two variables. Okay, and in this book we will see all the three exercise of the each question solution. Okay, so let me start by this note. Okay, and if you have any doubt, anything, you can ping a comment on the section, so we can help you. Okay, and also please provide your feedback. Okay, so let's start by this note, this video. Let's start our first question. So here it is saying the first question, from the pair of linear equation in following problem, find the solution by graphical method. Okay, so you have seen the linear equation, our long video. There we have told you all the method, that what is graphical method, what is substitution method, and what is elimination method. So here in this first question it is saying solve this linear equation and find their solution by graphical method. एक चीज हमेशा आप लोग याद रखना, जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे कोई भी मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, हमें उसी मेथड को फॉलो करना है. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, ओके, ओनली दिया जाता है कि सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो आपका जो भी मेथड अच्छा है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में अच्छे हो या एलिमिनेशन में या ग्राफिकल मेथड में, आप अपने अकॉर्डिंग वो मेथड ले सकते हो. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, वी हैव टू सॉल्व बाय ग्राफिकली. ओके, सो वी हैव टू फॉलो द ग्राफिकल मेथड. ओके, अगर आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में ज्यादा जानना है तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या बेल आइकन में आपको दे दूंगा, सो आप उसको देख सकते हो. लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होते हैं और क्या क्या मेथड होते हैं. ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 10 students of the class 10th took part in the mathematics quiz. मतलब total number of student यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया. If the number of girls is 4 more than the number of boys, मतलब हमारे दो वेरिएबल्स मिल गए, एक आपके गर्ल्स हो गए, दूसरे हो गए आपके नंबर ऑफ बॉयज हो गए. और गर्ल्स जो है दैट इज, यू कैन से दैट इज 4 मोर देन द बॉयज. ओके, होप यू गेटिंग. Now it is saying find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, मतलब find the number of girls and the boys who took part in the quiz. तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं. So we can say, hey, let the number of boys, ठीक है, number of boys हमारा कितना हो गया, x. Then number of girls is how much, number of girls, okay, is equal to y. ठीक है, now total number of student, how much you have given here, so total number of student,
यहाँ पे दिया हुआ है आपका total number of student, you can see here given already 10. So total number of students is 10. ठीक है, पहले आपका जितना भी सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया है, पहले जितने भी डेटा दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से लिख लो। नाउ उसके बाद आप मैथड को सॉल्व करो। नाउ वी कैन से, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AQ, this is a best way to write the step for the CBSE examination. So according to question, we can say number of student total is 10. So which means x plus y is equal to 10. This is the first equation, you have got it. Okay. Now second equation, it is saying, okay, the number of, here you can say number of girls. Here it is saying number of girls is 4 more than the boys. ठीक है, तो number of girls is equal to y is equal to what? We can say x plus 4. Okay, so this is got the second solution. Now ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ग्राफिकल मैटर में हमें दो सॉल्यूशन सेट बनाने होंगे, तो मेक श्योर आप उसके बेसिस पे फॉलो करो। तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे हमने लिया फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 10 हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सो वी कैन से हे x इज इक्वल टू व्हाट, 10 माइनस y, ये हमारा आ गया। अब इसके बेसिस पे हम एक सॉल्यूशन सेट्स बनाएंगे। तो मिनिमम जो हमें सॉल्यूशन सेट्स बनाने हैं वो आप एटलीस्ट 2 या 3 सॉल्यूशन सेट बनाओ, जिससे आपका एक बेटर स्ट्रेट लाइन आ जाए। ठीक है, तो हमने लिया 2 सॉल्यूशन सेट्स हम लेके चलते, वन इज x, वन इज y। तो हमारा अगर y का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, आप देखो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के मेन चैप्टर में बताया था कैसे सॉल्यूशन सेट निकालना। तो फर्स्ट हमने y का वैल्यू 0 ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, अब हमने y का वैल्यू 5 ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5। आप कैसे लोगे, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। जैसे आपने x का वैल्यू y का वैल्यू 0 लिया, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 0, सो x इज इक्वल टू 10 हो गया। सेकेंड सॉल्यूशन आपका हो गया, यहाँ पे आप देख लो, x इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो आपका x का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, तो ऐसे आपका एक सॉल्यूशन निकल गया। सेम वे आप दूसरा सॉल्यूशन सेट निकालोगे फॉर द सेकेंड वन। तो यहाँ पे हमने लिया y, यहाँ पे ऑलरेडी आपका वैल्यू दिया हुआ है, सो वी कैन यूज द सेम y इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 सॉल्यूशन सेट लेके देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर सॉल्यूशन टेबल। ओके, सो वी कैन से दिस इज योर x, this is your y. Now take up 3 solution sets. Okay, तो हमने लिया फर्स्ट x is equal to 4, हमने x is equal to minus 4 ले लेते हैं। ठीक है, x is equal to minus 4। ठीक है, तो y is equal to, you can say first solution set here, y is equal to minus 4 plus 4, so you will get 0। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन सेट हमारा निकल गया। जब x की वैल्यू -4 हम ले रहे हैं तो y की वैल्यू 0 आ रही है। नाउ सेकंड सॉल्यूशन सेट वी विल टेक x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सो 0 प्लस 4, सो y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन थर्ड सॉल्यूशन सेट वी विल टेक, सो थर्ड वन वी विल से ओके x वैल्यू इज 4, so y value you will get how much, you can say 4 plus 4, so you can get 8। now you got both the solution set। now अब आता है इसका मेन पार्ट, जिसपे आपका एटलीस्ट जो क्वेश्चन का हाफ मार्क्स डिपेंड करता है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना होगा। हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो वी विल ड्रॉ अ फ्री हैंड डायग्राम, बट मेक श्योर कि आप ग्राफ पेपर प्रॉपर्ली यूज करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्राफ सॉल्यूशन ले लिया, तो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आपका क्या हो जाएगा, x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन y एक्सिस। ठीक है, तो और दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होगा दैट इज योर ओरिजिन। ओके, सो सबसे पहले हम लोग नेमिंग करते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6
7. Okay, wait, we have taken the value of bigger number, so we will take a 2 division. Okay, so we will make 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. Same with y-axis also we will take here. So 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Okay, and here on the negative x-axis we will also take. So this is negative 2, negative 4, negative 6, negative 8, negative 10. Okay, you can say negative 10. Okay, negative 10 और ये इक्वल ब्लॉक के साथ हमें लेना है. So this is negative 12. Now below y-axis आपका negative, so negative 2, negative 4, negative 6, negative 8, negative 9, negative 10 and negative 12. होप यू हैव गॉट इट. हमने यहाँ पे सारे मार्क कर दिए. अब आता है हम सबसे पहले फर्स्ट टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए. तो फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट बोल रहा है x इज 10, y इज 0. ठीक है, तो x इज 10, y इज 0. So which means your graph will be reach here. This is a point. Now second is x is 5, y is also 5. So which means, so this will come somewhere here. You will, so this is your got 5 and this is got 5. So you can say somewhere here you will get. Okay, now you can join this line with the help of ruler. So I don't have a ruler, so I'm just doing a free hand. Okay, so आप make sure आप ruler का इस्तेमाल करना. ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, सो वी हैव टू ऑलवेज यूज द स्केल बिकॉज लीनियर इक्वेशन हमारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है. ठीक है, क्लियर है. तो उसके बेसिस पे आपको ग्राफ बनाने हैं. ठीक है, तो हमने यहां से सॉल्यूशन बनाया. सो यू कैन से दिस इज द फर्स्ट लाइन यू हैव गेटिंग. ओके, so this is the first line of the equation. So you can, if you want, you can write here this is your first equation, so that is x plus y is equal to 10. Okay, now same way अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो सेकेंड में हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, x is equal to -4, y is equal to 0. So this is your first coordinate. Now second में आपका x is equal to 0, y is equal to 4. So which means this one. Okay, now third one you can say x is equal to 4, y is equal to 8. So x is equal to 4 and y is equal to 8. So you can say it will come somewhere here. Okay, so you can now join with the help of ruler all these 3 points. Okay, so wait, आई एम यूजिंग अ फ्री हैंड. तो आप इस चीज का गलती मत करना कि फ्री हैंड से बनाने के लिए आप स्केल के मदद से बनाना. सो यू कैन से यू विल गेट दिस सेकंड इक्वेशन लाइन. सो दिस इक्वेशन यू हैव y is equal to x plus 4. Okay, so you can say they both are meeting at this point. Okay, so which means it is a consistent solution. So which means it is a intersects. So it is intersects. So which means यहाँ पे अगर आप सही से निकालोगे ग्राफ के बेसिस पे, तो this will come somewhere around 3. X will be 3 and y will be 7. So you can say x is your have got 3 and y you got 7. Okay, so which means number of तो आप यहां पे लिख सकते हो नंबर ऑफ एक्स. आपने क्या लिया था, नंबर ऑफ एक्स. एक्स क्या लिया था, नंबर ऑफ बॉयज. सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 and number of girls is equal to how much? Number of girls is equal to, you got 7.
So hope you understand this question, how easy way we have solved. But again neat and clean हमें solve करना है, जिससे आपका नंबर डिडक्ट नहीं हो। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees. And second times it is saying 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. So it is saying find the cost of one pencil and of one pen. ठीक है, अगेन इस चीज को हमें किससे सॉल्व करना है, ग्राफिकल मैथड से सॉल्व करना है। तो मेक श्योर आप ग्राफिकल मैथड में सारी चीज प्रॉपर वे में लो, और जो भी आपके वेरिएबल्स दिए हुए हैं, पहले जो भी डेटा आपके दिए हुए हैं उसको आप प्रॉपर पहले लिख लो। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं, लेट दी, हम वेरिएबल्स क्या लेते हैं, सो लेट one pencil price is one pencil price, or yeah, you can say cost. Let the one pencil cost X. Okay, now same way let one pen cost is what, Y. तो हमने यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स डिसाइड कर लिया, एक हमारा पेंसिल का है प्राइस और एक हमारा पेन का प्राइस, बट एक एक पेन और एक एक पेंसिल का प्राइस है, तो इसका ध्यान रखना। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल से ओके, सो 5 पेंसिल्स, सो 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदा है, कितने में खरीदा, 50 रुपीज। तो एक पेन पेंसिल की प्राइस कितनी है हमारे पास, X रुपीज है। तो 5 पेंसिल की प्राइस कितनी हो जाएगी, तो प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 5 pencils. 5 pencil is how much, 5x, and price of 7 pens. Okay, 7 pens. 7 पेन, एक पेन का कॉस्ट आपका y रुपीस है, तो 7 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, 7y. So based on that, we can make one equation. So first equation is 5x plus 7y is equal to 50. Okay. Same way, we will make a second equation. तो second equation में बोल रहा है 7 pencils. So price of 7 pencil is how much? One pencil cost is X rupees. So 7 pencil cost is 7x. Now, and 5 pens. So one pen cost is Y. So 5 pen cost is how much? 5y is equal to 46. So now you can say you got the two equation, one equation and second equation. Now we have to find their solution set. Then we will draw the graph. Okay, clear? So let me take a first equation. So first equation we will take here. So our first equation is 5x plus 7y is equal to 50. Okay, so again we will take a two solution sets for both of them. ठीक है, तो हमने फर्स्ट टेबल बना लिया। ठीक है, तो दिस इज योर x and y. So x y. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है 5x plus 7y is equal to 50. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन बना लेंगे, 5x plus 7y is equal to 50. ओके, नाउ अब यहां पे आप ध्यान से देखो मैं कैसे सॉल्यूशन बनाता हूं। 5x, अब 7y को मैंने ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड में, सो इट विल बी हाउ मच, -7y, एंड नाउ 5 is multiplying with the x, so now I will transpose this one, so you will get how much, 50 minus 7y over 5. ओके, नाउ अब हम y की कोई भी वैल्यू लेंगे। ओके, लेट वी से y वैल्यू इज 0। ठीक है, हमने y का वैल्यू ले लिया 0। तो अब यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करो, सो 50 माइनस 7y, 7 times 0 over 5. So x you will get how much? Let's see. So you can say 50, 7 times 0 is 0 and 50 over 5 you got 10. So x you got 10. So here we will write x is equal to 10. Same way
आप सेकेंड सॉल्यूशन ले लो, हम बोलेंगे ओके लेट्स टेक दी y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो आप ऐसे करके सॉल्व करो, तो यहां पे 50 माइनस 7 टाइम्स 5, सो x you will get how much, you will get 3, okay, so this way you have to take this solution, ठीक है। क्लियर है? नाउ सेम वे अब हम सेकेंड सॉल्यूशन को लेके आते हैं। तो सेकेंड सॉल्यूशन हमारा क्या है, 7x प्लस 5y, ओके, इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो हम यहां पे भी सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, ठीक है, और दो ही सॉल्यूशन हम लेके चलते हैं, दो में आपका इजी वे में स्ट्रेट लाइन आ जाता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिया सॉल्यूशन, हम अपना बनाते हैं। तो सॉल्यूशन हम कैसे बनाए, तो सबसे पहले 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ओके, सो 7x और 5y को आप ट्रांसपोज कर दो अदर साइड, सो इट विल बी गेट हाउ मच, 46, ओके। 46 minus 5y. Now you can transpose this 7 to other side. So 7 is multiplying with the x. So x is equal to how much? 46 minus 5y over 7. ठीक है, तो यहां पे हमारा आ गया आपका x और y। अब डिपेंड करता है हम वैल्यू क्या लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू लेते हैं 5, ठीक है। अगर आप y का वैल्यू लोगे 5, तो कैसे सॉल्व करना है, तो अगर आपने y का वैल्यू लिया 5, ठीक है, तो y का वैल्यू लिया 5, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो व्हाट इज आवर इक्वेशन, सो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y ओवर 7, है ना। तो हमने y का वैल्यू क्या लिया, यहां पे 5 लिया, तो let we substitute this one, so we can say x is equal to 46 minus 5 times 5, so you will get how much, 5 over 7 है आपका, so you can say this is 46 minus 25, 5 times 5 minus 25 over 7, so ये आपको कितना मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, so this one you will get 21 over 7, so which means x is equal to 3, so we will substitute x is equal to 3 here, okay, so when y value is 4, तो आपका x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन निकालना है, तो सेकंड सॉल्यूशन सेम वे हम यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये हमने फर्स्ट सॉल्यूशन निकाला, अब सेकंड सॉल्यूशन के लिए हमने क्या बोला, y इज इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 46 माइनस 5 टाइम्स 0 over 7, so this one you will get how much, 46 over 7, okay, so 46 over 7 आपका मिल गया, ठीक है। तो अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, so this one you will get 42 you will getting 6 times, then point, आप इसको चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, so 46 over 7, so 42 you will get 6 times, then you will get remainder 4, so put a decimal, so here you can take a 5, okay, so we will say 6.5, okay, we will not go further decimals, okay, clear, so 6.5, so here we will write 6.5, so when the y value is 0, x you are getting 6.5, okay. Now the most important thing, we have to draw the graph, most important things, we have to draw the graph, okay, and make sure graph should be clear, cluster, okay. So we will say first mark the point, so this is your origin, so this is your positive axis, positive x-axis, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay, let's we go with 10, okay, same with y also we will draw, so this is 1 2 3 4 5
6 7। ओके, आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाना, मैं फ्री डायग्राम आपके लिए बना रहा हूं फ्री हैंड, क्योंकि जो आपको समझ में आए, बट आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाना, ठीक है। नाउ दिस वन यू हैव -1, -2, -3, -4, -5, and this one you got how much? -1, negative y-axis, -2, -3, -4, -5. Okay, clear? Now, let me represent the coordinates. So first we will represent the first equation coordinate. So x is equal to 0, x is equal to 10. So now represent the first coordinate. When x is equal to 10, y is coming 0. So which means this is a point, first point you will get this one. Okay. Now second one, it is saying when x is equal to 3, y is equal to 5. So x is equal to 3, so y you will get 5. Okay. So which means somewhere here you will get here this point. Now you can draw both of them with the free hand, means with the help of ruler. Okay, so we are drawing with the free hand because मेरे पास ruler नहीं है. So आप इसको proper ruler से बनाना, दोनों को ruler से connect करना. So you can say a straight line you will get. ठीक है. Now same way we will draw the second point. So second equation आपका क्या है? 7x plus 5y is equal to 46. और यहाँ पे आपका x is equal to 3, y is equal to 5 आया है. तो x is equal to 3, y is equal to 5. So same coordinates है. And now second coordinate, x is equal to 6.5 and y is equal to 0. So x is equal to 6.5. So which means this is the two line we will draw. So you can say it will pass from here. Okay, like this. Okay. So you will get line like this. So it can say they are also intersecting each other. So which means this is the point, it is coming what? 3, 5. X is 3, Y is 5. So you can say now here based on above, you can say, so what you have taken the X? So cost of one pencil. Cost of one pencil is how much? 3 rupees. Okay, because आपका first coordinate x है यहाँ पे. Same way cost of one pen. ठीक है, one pen, how much you got? That is 5, y coordinates. So you can say y is 5 rupees. Okay, so hope you understand this way कि कैसे हम इसको सॉल्व करना है. ठीक है, हाँ, बट मेक श्योर ग्राफ शुड बी क्लियर. अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में लीनियर इक्वेशन का फुल वीडियो चेक कर सकते हो. और मैंने इसके अलावा भी एक मेथड अलग से वीडियो बनाया, मेथड टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन. तो दोनों वीडियो आप चेक कर सकते हो जिसमें आपको प्रॉपर बताया हुआ है कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं. होप दिस मच इज क्लियर. ओके, now coming with the next question we have. So now next question we will talk about. Here it is saying on comparing the ratio. यहाँ पे बोला है comparing ratio A1 over A2, B1 over B2, C1 over C2. Find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, parallel और कोइंसिडेंट. हमारे पास तीन इक्वेशन दिया है, हमें रेशियो के बेसिस पे बताना है कि वेदर द लाइन आर इंटरसेक्ट्स, पैरेलल और कोइंसिडेंट. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप यहां पे कर देता हूं सो आपके लिए आसान हो कि इंटरसेक्ट्स में रेशियो क्या होते हैं और पैरेलल में रेशियो क्या होते हैं. तो अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन रेशियो होते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करें तो A1 over A2 not equal to B1 over B2. Then it is, you can say they have intersect line, they have intersects and having exactly one solution. Okay, intersects. ठीक है, क्लियर है. नाउ अगर दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आया
ठीक है। सेकंड हमारा बोलता है कि इफ A1 over A2 रेशियो इज इक्वल टू B1 over B2, ठीक है, is equal to C1 over C2, then it is called coincident, ठीक है। इसमें दोनों लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं और दे हैव अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ तीसरा आपका जो होता है, यू कैन से तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, so if I will say you have A1 over A2 is equal to B1 over B2 but not equal to C1 over C2. So this one is called parallel lines. Parallel and here no solution. यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है। तो ऐसे आपको तीनों के रेशियो निकालने। अब बहुत लोग पूछेंगे A1 B1 या C1 या A2 B2 C2 क्या होता है? तो ये कोफिशिएंट होते हैं लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में देखना है तो आप हमारा लीनियर इक्वेशन का फुल वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। मैंने आपको बेसिक में यहाँ पे समझा दिया। So let me come with the first question. So what is our first question? It is saying, okay, the first question is we have 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. Second equation is 7x plus 6y and minus 9 is equal to 0. तो A1 की बात करें, A1 होता है फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x। B1 की बात करें तो B1 is the coefficient of y in the first equation. C1 is a constant term, ठीक है। सेम वे A2 की बात करें, A2 is a coefficient of x in second equation. B2 is the coefficient of y in the second equation and C2 constant term of the second equation. तो यहां पे हम सिंपल बात करें, अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा और आपको एक्सपेंशन में लिख देता हूं, A1 over x plus B1 y plus C1, ठीक है। इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। एंड दिस वन यू कैन से A2 x plus B2 y plus C2 is equal to 0। तो आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट A1 है x का, और फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट y B1 होता है और C1 कांस्टेंट होता है। तो इसके बेसिस पे हमने रेशियो निकालेंगे A1 over A2 is equal to how much you will get? 5 over 7. Okay, same way we will say here B1 over B2 is equal to, we can say minus 4 over 6. Okay, now which you can say you can reduce them also. So you will get this, both are factor of 2. So you get how much? So minus 2 over 3. Now, same way we will say here C1 over C2. So C1 over C2 you will get how much? 8 over 9. Okay. Now, based on that, you can say here A1 over A2 not equal to B1 over B2. तो आप देखो यहाँ पे किससे मैच हो रहा है? तो फर्स्ट वाले से मैच हो, तो हम बोलेंगे इट इज इंटरसेक्ट लाइन, इंटरसेक्ट, ओके। एंड जब इंटरसेक्ट्स बनेगा तो दे हैव ओनली वन सॉल्यूशन। मतलब अब जैसे मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन करके बताया था, तो यहाँ पे देखो ये जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ऐसा लाइन बनेगा और यहाँ पे एक ही कॉमन, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो जब भी हमारा ऐसा आएगा, सो यू कैन से यूनिक सॉल्यूशन, ओके, यूनिक सॉल्यूशन, ओके, क्लियर है। Now let's solve the second question. So second question, it is saying, okay, let me say second one we have given 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 and second equation 8x plus 6y plus 24 is equal to 0, ठीक है। तो यहां पे भी हम सबसे पहले A1 over A2 का सॉल्यूशन निकालेंगे। सो दैट इज अ 9 over 8।
अब 9 और 18 आया, तो ये फैक्टर है एक दूसरे, तो 1/2 आ जाएगा. So this is 1, this is 2. Now same way you can find b1 over b2. So how much you will get? b1 over, so 3/6. So this one you will also get 2, 1, so 1/2. And last you will get here c1 over c2. So this one you will get how much? 12/24. So this both are factor of each other. So 1/2. So you can say this is also getting what? 1/2. तो इनका देखो सारा रेशियो इक्वल आ गया. So we can say here, okay, a1 over a2 is equal to b1 over b2, okay, is equal to c1 over c2. ठीक है? So which means it will forming what? Coincident. It will forming coincident. Okay? Coincident lines. और यहां पे जो दोनों कोइंसिडेंट होगा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, तो विच मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन. ठीक है, याद रहेगा, इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशन. अब आता है थर्ड क्वेश्चन. तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6x minus 3y plus 10. तो थर्ड का हमारा इक्वेशन है 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन आपका जो यहाँ पे है 2x minus y plus 9. So 2x minus y plus 9, ओके, इज इक्वल टू 0. तो यहां पे भी हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? a1 over a2. तो दैट इज 6/2. सो यू विल गेट हाउ मच? 3. दोनों एक दूसरे के फैक्टर है, 3 टाइम्स. नाउ सेम वे यू कैन फाइंड b1 over b2. So you will get how much? -3 over -1. So you will get what? 3. And c1 over c2. You can say 10/9. So no common factors. So based on that, we can say here, okay, so a1 over a2 is equal to b1 over b2 and not equal to c1 over c2. ठीक है, तो अब देखो यहां पे हमारा कौन सा लाइन बनेगा, कौन सा है? तो इट इज अ पैरेलल. ठीक है, तो पैरेलल बनेगा. सो इट इज फॉर्मिंग अ पैरेलल. ओके, but the parallel line never intersects, so you can say no possible solution. Okay, no possible solution. Okay, because parallel line never intersect each other. Okay, so थर्ड वाले में हमारा no parallel solution. तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे हमने सॉल्व किया. अगर कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, सो वी कैन हेल्प यू. और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है ये कैसे काम करता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लीनियर इक्वेशन का फुल वीडियो देख सकते हो. ओके, नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट question. So next question, it is saying on comparing the ratio a1 over a2, b1 over b2, c1 over c2, find out whether the pair of linear equation are consistent और इनकंसिस्टेंट. तो सबसे पहले आप मतलब समझो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है. अगर कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें हमारा एटलीस्ट वन पॉसिबल कॉमन सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें नो कॉमन सॉल्यूशन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमारे पास 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचों में हमें चेक करना है वेदर दे आर एबल टू फॉर्म अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. ओके, बहुत इजी है, सेम जो मेथड हमने यूज किया है वही यूज करना है. ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव 3x plus 2y इक्वल टू 5. ठीक है, नाउ सबसे पहले आप देखो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में नहीं दिया है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन मैंने बताया था a1x plus
b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया, सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन में लाना होगा। सो वी कैन ट्रांसपोज दिस 5 टू दिस साइड। सो ट्रांसपोज होगा तो 5 अभी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। सो यू विल गेट 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम वे सेकेंड इक्वेशन को भी हम लेते हैं। सो सेकेंड इक्वेशन यू हैव 2x माइनस 3y is equal to 7. ठीक है, now you can say this standard equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So we will bring them, this also is a standard equation. So 2x minus 3y minus 7 is equal to 0 हमने ले आया। अब हमें क्या निकालना है, a1 a2 सबका रेशियो निकालना है। So first one we will start finding this one. Okay, so a1 over a2, you will get how much? a1 is given 3 and a2 you have given 2. ठीक है, same way you can say b1 over b2, you have given how much? 2 and minus 3. Okay, and last you can find here c1 over c2, you will get given minus 5 over minus 7. So which means you will get 5 over 7. So now you can say here a1 over a2 not equal to b1 over b2. Okay, and also not equal to c1 over c2. So which means this ratio are not equal. So I have already told you when you have getting this type of solution, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था, जब ये ऐसा होगा तो they have one solution intersects. Okay, और इसी को हम लोग बोलते हैं consistent बोलेंगे। तो this will form consistent equation, this will form consistent, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है consistent। Okay, so consistent means one solution, one possible solution because they both will intersect at a one point. ठीक है, one solution। और ये one solution क्यों होगा? Because of intersects। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी बताया था। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है? 2x, what is second equation? We will see here. So second equation, it is given 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9. ठीक है, so let we solve the second equation. So we will say second equation is 2x minus 3y is equal to 8 and second equation 4x minus 6y is equal to 9. So सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। So 2x minus 3y minus 8 is equal to 0. And what is a standard equation for second one? So 4x minus 6y minus 9 is equal to 0. Hope you getting? Now we will find here a1 over a2. So a1 over a2 you got how much? 2 over 4. So that is common factor 1 and 2. So you can say 1 over 2. Now same way you can say b1 over b2. You can say here 3 over 6. Minus 3 and minus 6. So you will get minus minus cancel. So this one also you can say 1 and 2. So 1 over 2. And last one you have c1 over c2. So this one you got minus 8 over minus 9. So this one you got minus minus cancel, so 8 over 9. Now you can say we can write here a1 over a2 is equal to b1 over b2 and not equal to c1 over c2. तो आपको याद होगा हमने जस्ट पहले लिखा था, यहां पे ये क्या हो रहा है, दोनों जो हमारा इक्वेशन बनेगा, सो दैट हैव मेनी सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज इट इज अ कोइंसिडेंट।
ओके, सो यू कैन से विच मीन्स इट हैव, मैंने आपको पहले ही बताया था जब ऐसा इक्वेशन होगा दे विल फॉर्म अ पैरेलल लाइंस, विच मीन्स दोनों जो लीनियर इक्वेशन होंगे दोनों के जो ग्राफ बनेंगे वो पैरेलल लाइंस होंगे, तो विच मीन्स दे हैव पैरेलल, सो पैरेलल लाइन होंगे तो क्या होंगे, नो कॉमन सॉल्यूशन, सो वी विल से इनकंसिस्टेंट, inconsistent. Okay, so no common solution, no possible या no common solution, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. Okay, now coming with the third question. So third question it is saying here it is given in fraction form, so no, don't have to worry, so easy है fraction को भी solve करना. So 3 over 2x plus 5 over 3y is equal to 7, और second equation है 9x minus 10y is equal to 14. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको solve करते हैं. So सबसे पहले हम लोग इसको solve करते हैं, तो हमारा third equation we can say 3 over 2 over x then plus 5 over 3y is equal to 7. Second equation you have 9x minus 10y is equal to 14. Okay, so सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं अपने. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब चाहे तो इसको पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्टली लेके चल सकते हो, तो डायरेक्टली ही में हम लेके चलते हैं जो हमारा वर्क ज्यादा इजी रहे. तो लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे कांस्टेंट को भी हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं. सो 3 over 5x प्लस 5 over 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सेम वे सेकेंड इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0. ठीक है, हमारा ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं. तो सबसे पहले a1 over a2. तो अगर हम a1 की बात करें तो a1 हमारा कितना दिया हुआ है, 3 over 5 दिया हुआ है. ठीक है, 3 over 2 दिया हुआ है, वेट यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया है. ठीक है, 3 over 2 दिया हुआ है. सो 3 over 2 over और a2 कितना दिया, 9, तो 9 दिया हुआ है. सो यू कैन सॉल्व दिस वन, सो यू विल गेट 3 over 2 times 9, so this one you got how much, 3. So you will get here 1 over 6. ठीक है, same way b1 over b2. So b1 over b2 का भी हम निकालते हैं बिकॉज ये भी हमारा फ्रैक्शन में दिया है. So 5 over 3 over 10. ठीक है, so we can solve this one. So we can say 5 over 3 times 10. So this one you got how much, 2. So here also you will, and here you can say b is given minus. So we will have minus, b2 is given minus. So you will get here minus 1 over 6. Now let's solve c1 over c2. So c1 over c2 you will get how much, minus 7 over minus 14. So this one you got minus minus 7, so this is 2. So 1 over 2. So you can say these are not equal. So we can say a1 over a2 is not equal to b1 over b2 and not equal to c1 over c2. Okay, so you can say all three ratios are not equal. So which means like a first question. So we can say it is a consistent and only one common solution. That is because of intersects. Okay, consistent and one possible solution. Okay, clear? So now this way you have to solve this one. Now let's solve the question number 4. So question number 4, it is saying 5x minus 3y is equal to 11 and minus 10x plus 6y is equal to 22. Okay, let me solve this one. So question number 4 we will write here. So question number 4. So 5x minus 3y is equal to 11.
Okay, that is first equation. And second equation, minus 10x plus 6y is equal to minus 22. Hope you have clear. So first what we have to bring, both the equation we have to bring into a standard form equation. Okay, so first we will say this one is 5x minus 3y and minus 11, because 11 will transpose from the right side to left side. Okay, now same way second equation we can say minus 10x and plus 6y and plus 22 is equal to 0. Okay, clear. Now based on that we will find, hey, a1 over a2 is equal to how much we will get, 5 over minus 10 is equal to how much, 1 over 2 minus. Okay, same way we will find b1 over b2. Okay, b1 over b2 we will say how much, 3 minus 3 over 6. So you will get here also this one 2. Okay, this, so you will get minus 1 over 2. And last you will have c1 over c2. So minus 11 over 22. Okay, so this one also 2. So you can say minus 1 over 2. So now you can say this all are having what? Equation are ratio are equal. So you can say a1 over a2 is equal to b1 over b2 and is equal to c1 over c2. Now all ratio are equal when it is happening, when it is a coincident. Coincident, which means they have a finite solution. Okay, so which means it will also form consistent. So you can say consistent. Okay, and they have infinite solution. They will form infinite solution. Infinite number of solution. Okay, hope you are clear. Now last question we will see here. So last question it is saying again 4 over 3x plus 2y is equal to 8, and second equation 2x plus 3y is equal to 12. Let me solve this one. So again we will take this fifth one. So fifth one we will write first both the equation, 4 over 3x plus 2y is equal to 8. Okay, and second equation 2x plus 3y is equal to 12. Hope we have written. So first our work is what? Bring both the equation in a standard form. Okay, so hope you have got it till now. We have done the similar type of 3 there and here 5. This is doing the 8 question. So hope you understand how we have to solve. So first one we can say 4 over 3x plus 2y minus 8 is equal to 0. Okay, simple way. Same way here we will say 2x plus 3y minus 12 is equal to 0. Hope you have got it. Now after that we will find quickly their ratio. a1 over a2 is equal to, we can say 4 over 3 over 2, because a1 you have given in fraction. So I have told you how to solve a fraction previous question. So 4 over 3 times 2. So this one you got 2. So how much you will get? 2 over 3. Same way you can find b1 over b2. So b1 you have 2 and b1 2 and b2 you have 3. And now you can find c1. c1 over c2. That you will minus 8 over minus 12. So minus minus cancel. This is 2 and this is 3. Okay, both are factor of 4. So you can say 2 over 3. So again you can say in this one a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2, like previous question. So you can say this is consistent, consistent, and they will form how many? Infinite number of solution, infinite number of solution. Okay, clear? So hope you have clear with all this 3 question.
because we have solved similar type of 8 question. So अब आपको consistent, inconsistent या parallel, intersect, coincident क्वेश्चन मिलेगा तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, और एवरी ईयर इससे एक क्वेश्चन आता है, तो मेक श्योर यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक। मैंने हर एक टाइप का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी और इस टाइप के क्वेश्चन है तो हम लोग उसको भी करते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। मतलब बोल रहा है कि इसमें कौन पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ इट इज अ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। कंसिस्टेंट में कौन कौन सा आएगा हमारा, आइदर इंटरसेक्ट आएगा या कोइंसिडेंट आएगा, ठीक है। क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इसी का बोल रहा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हम लोग सबसे पहले दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले a1 over a2 is how much 1 over 2, b1 over b2 you can say how much we have getting 1 over 2. Now last one c1 over c2 you can getting minus 5 over 10 minus 10. So you will get how much, this is both are factor of 5, so 2, so you will get 1 over 2. So which means you can have a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2. तो देखो दोनों सारे रेशियो हमारे सेम आ गए, so we will say it is a what, consistent. And consistent का मतलब they have a infinite solution and also it is a coincident lines. Okay, so we will solve the solution and graphs. Okay, सबसे पहले हम इसका solutions टेबल बनाते। तो हमारा solution फर्स्ट का है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 और y हमारा ट्रांसपोज हो गया, तो 5 माइनस वाई, ठीक है। तो हमने इस पे सॉल्यूशन टेबल सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। तो सबसे पहले दो सॉल्यूशन ही लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं हम लोग, जो हमारा इजी वे में बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे x ले लो, y ले लो, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट you can take here y is equal to 0. जब y is equal to 0 ले लोगे तो आपको कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। तो x is equal to 5 minus 0. So x you will get how much, 5. Okay, now next one हम लेते हैं y is equal to 5 plus 5। तो अब y का वैल्यू आप 5 पुट करके देखो, तो x is equal to 5 minus 5. So x is equal to 0. Got the solution set of the first equation. Clear? We will find the solution sets of the second equation. So second equation, how much you have given? You have given 2x plus 2y minus equal to 10. Okay. So same way we will say this one is equal to 2x. हम फिर again y को transpose करते हैं, तो 10 minus 2y. So x is equal to how much? So 10 minus 2y over 2, ठीक है। अब सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। अगेन 2 सॉल्यूशन हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो दिस वन यू कैन से, सो दिस वन x, दिस इज y, x एंड y। तो अब हम अगर y का वैल्यू 0 लेते हैं, तो लेट वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट पेज। सो व्हाट इज योर सॉल्यूशन, x is equal to 10 minus 2y over 2. So now you have taken the y is equal to 0. So x you will get how much? So let's substitute. So x is equal to 10 minus 2 times 0 over 2. Okay, so you will get here x is equal to 10
over 2. So x is equal to 5. So first solution you got it. Now we will take another y is equal to, here you can take a 5. Okay, now let's see. So x is equal to 10 minus 2 times 5. So u over 2. So you can get x is equal to 10 minus 10 over 2. So which means x is equal to 0. So you can say when you have taken the y value 0, x you got how much? You got 5. And when you taken the y value 5 and x you got 0, means overall both same solution. Now based on that we will have to draw the graph. So we will draw the graph. So here we will taking a graph. Okay, we are taking, because these are all the points from, okay, so we will draw the graph. So this one we can say graph. Okay, so this is your x and y axis. So first we will point all the, so we can say this one is equal to here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And this side -1, -2, -3 and -4. And this is your origin. So here also 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and below is you have -1, -2, -3, -4, -5 and -6. Hope you have clear. Now we have to draw the graph. So first we will take the first one. Both coordinates are same. So let's say first one coordinate is given how much? We have 5, 0, which means x is equal to 5 and y is equal to 0. So we will substitute here. So which means it will get here. Okay, now let's say the second coordinate. So second coordinate 0, 5. So which means x is 0, y is 5. So which means this is on y-axis. So you will get here, and you can say the both having the same coordinate. So no need to represent. So we can say, hey, the equation will go like this way. Okay, this is the, okay, so equation you will have like this way. Okay, so they both will coincident to each other. Okay, so we will say, okay, this equation are 2x plus 2y is equal to 0, and second one x plus y is equal to 5. Okay, clear? So this way we have to draw the graph. Okay, and also most important, mark the axis. This is y, this is x, this is y dash, this is x dash. Okay, clear? So now coming with the second question. So what you have a second question here given, x minus y is equal to 8, and second one 3x minus 3y is equal to 16. Okay, let me solve this one, second question. So second question we have given x minus y is equal to 8, and second one we have given 3x minus 3y is equal to 16. So first what we have to be, we will bring them into a standard linear equation. So we will say x minus y minus 8 is equal to 0. And again second equation 3x minus 3y, 16 will transfer from right side to left side. So minus 16 is equal to 0. Okay. Now quickly we will find a1 over a2. a1 over a2 is equal to how much you will get here. So we will say 1 over 3, and b1 over b2. b1 over b2 you will get how much? We will say 1 over minus 1 over minus 3. So that is equal to 1 over 3. Now c1 over c2. So c1 over c2 again minus 8 over minus 16. So you will get what? 1 over 3, 1 over 2.
Okay, this is a both factor. So 1 and this one you got 2. Okay, so but here you can say ratio are not equal. So we can say this one, if I will say, so ratio A1 over A2 is equal to B1 over B2, but not equal to C1 over C2. Okay, so hope you remember this will form which type? Inconsistent, basically parallel lines. Inconsistent. Okay, inconsistent are parallel lines. No common solution. No common solution. No common solution. Okay, hope you're getting clear. Now, let me take a third one. So, third one equation we have given, that is 2x plus y minus 6 is equal to 0. And second one, 4x minus 2y minus 4. Okay, so let me solve quickly. So, third one. Okay, so third one we will take here. So we will say third one, 2x plus y minus 6 is equal to 0. And second equation, 4x minus 2y and minus 4 is equal to 0. Okay, and best part, this is given, you both have given the in a standard form, so no need to convert. So directly we can go with find the solution. So we can say a1 over a2 is equal to 2 over 4. So you got how much? 1 over 2. Okay, clear? Now, same way you can say b1 over b2. You got how much? 1 over minus 2. Okay, so 1 over minus 2. Okay, and c1 over c2. You can say you will getting how much? Minus 6 over minus 4. So you will get here 3 over 4. Okay, so here you can say in this one we can say a1 here, a1 over a2 is not equal to b1 over b2 and not equal to c1 over c2. Okay, so which means it will form which one? It will form consistent. Consistent. And consistent means, and also this will have intersect, means one common solution. One common solution or one solution. Okay, hope you're getting. So we have to draw now graph because it is a consistent. So first one, what we have, we will find their solution set. So first one we will take, okay, our first equation is 2x plus y is equal to minus 6. Okay, 2x minus 6 is equal to 0. So first one, we can make this equation. So 2x plus y is equal to 6. Then y is equal to, you can say 6 minus 2x. So let me draw this solution set of this first equation. Okay, so you can take this one x, this is y. Okay, so now x and y. So let me say first one, we will take the x is equal to 0. So x is equal to, if you take a 0, so y you will get how much? 6. Now x if you take a 3, if you solve x if you take a 3, so 3 if you take y you will get 0. Okay, so first one you got it easy way. Now let's solve the second one, 4x minus 2y minus 4. So here we will write 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. So same way we can say, hey, 4x minus 2y is equal to 4. Now we can say this one is equal to 4x is equal to 4 minus plus 2y. So x is equal to, you can say 4 plus 2y over 4. Okay, now let's find their solution. So first one we will write here, take the solution table. Okay, so here you can make a 2 column. Okay, so this one you can say x, y. Okay, now here we will say
first one, we will take y is equal to 0. Y is equal to 0 if you take here, I will solve this one. This is little complicated. So x is equal to 4 plus 2 times 0. So you will get what? So you will get 4 over 4, which means 1. So you can say x is equal to 1. Now, next one, if you take x is equal to minus 2. Okay, so minus 2, you can say x, you can write here, we will get 4 plus 2, 2 times minus 2, okay, over 4. So you will get here, so here you can say 4 minus 4 over 4. You will get what? 0. So here you can write 0. So now we can draw the graph. Okay, so let me draw the graph, first one. So we will draw the graph here. Okay, now this is the graph. So you can mark the axis. X-axis, this is your x dash. This is your y, y dash. Okay, now mark it here. That is, you can mark from here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Same way in this side, -1, -2, -3, -4, -5. And this side you have upper y-axis 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and you can take or you can leave it. Okay, now below is -y, -y, -1, -2, -3, -4, and -5. Okay, now we have to plot the graph. So like now we will say your first coordinate of 0, 6, which means x is 0, y is 6. X is 0, y is 6. Okay, so we have to take this graph little ahead. So I'm taking this graph little ahead. So because we have to represent 6, so you can say this is 6. Okay, this is your y. Okay, so we will say this is your first coordinate. Okay, first point. Now next one, you have given how much? 3, 0, which means x is 3, y is 0. So which means this one. Okay, so now you can draw the graph like this way with the help of ruler. Again, I'm saying you can draw with the help of ruler. And our screen is small, so we will make here. Okay, now hope you're getting. Now let me draw this second one. Second one already given in the same screen, so we can use them. So here first coordinate 1, 0, which means x is 1, y is 0. So this is the point. Now second is x is 0, y is equal to -2. So which means this is the coordinate. Now it can draw them. So join them. So carefully you can join. So you can say, you can draw like this. So they will touch like this way. They will move. Okay, this is the, so you can say this one, a line is for which equation? 4x minus 2y is equal to 4. And this equation is for 2x plus y is equal to 6. Okay, now they both are intersecting here. So we can say this point is equal to how much? This is 2, 2. So one common solution because intersecting line is forming. So hope you have clear with this one. Now coming with the last question. So what is the last question? Is given, this is a fourth part. Okay, so it is given 2x minus 2y and -2 is equal to 0. And second equation 4x minus 4y minus 5 is 0. Okay, so let me solve the fourth part. So fourth part we will write here. Okay, so our equation is 2x minus 2y minus 2 is equal to 0.
and second equation we have 4x minus 4y and minus 5 is equal to 0. Okay, so already given a standard equation, no need to solve further. So we can say, hey, a1 over a2 is given how much? 2 over 4, which means you will get 1 over 2 common, 1 and 2. Okay, now same way you can say b1 over b2. You will get how much? b1 over b2 minus 2 over 4 minus 4. So again common, so 1 and 2 and negative cancel, so 1 over 2. And last one you can say this one 6c1 over c2. So you will get minus 2 or minus 5. So negative get cancelled, so you will get 2 over 5. So you can say this one a1 over a2 is equal to b1 over b2, but not equal to c1 over c2. So which means they will forming inconsistent, means a parallel. Okay, inconsistent, no common solution. Okay, inconsistent. They will, so which means they will form, so which means they will form inconsistent, inconsistent. Okay, and which means no common solution here, no common solution. Hope you have clear with this one. Yeah, so this way we have solved this type of the question. Now coming with the next question. So now we will see the fifth question. So it is saying half the perimeter of rectangular garden. Rectangular garden we have given. Okay, so half the perimeter must be read properly. Now first we will see what is the perimeter of rectangle. Suppose 2 times length plus width, length plus width is equal to perimeter. Okay, that is a formula of perimeter. Now it is saying whose length is 4 meter more than width and its half perimeter is 36 meter. So find the dimension of the garden. So first one we can say, okay, let the length is equal to length, we can say is equal to x. Now same way we will say width is equal to y. Okay, now according to question it is saying length is 4 meter than width. Okay, so we can say length is 4 meter than width. Okay, so we can say x is equal to 4 plus y. So equation you will get what? This is your first equation, you can say. Okay, now second equation it is saying half the perimeter. So half the perimeter means, so x plus, if you see this one, you're getting a 2L plus 2 width is equal to perimeter, but it is saying half. So we will have half means what? Half perimeter means x only, and x length and y width is equal to 36. So we will get two equation. So here also we will make this one as x is equal to 36 minus y. So we will get two equation. Now both the equation we will find their solution sets. So first one we will take x is equal to 4 plus y. Okay, so their solution set we will find. First two solution set. Okay, so here there is a two solution set. Okay, so first one we will take x, second one we will take y. So now you can say when y is equal to 0, x you will get 4. When y is equal to 4, x you will get, when y is equal to minus 4 you can take. Y is equal to minus 4, x you will get 0. Same way you can find the second solution set. X is equal to 36 minus y. Okay, so now here you can say this is the solution set we have to draw. So two solution set sufficient. Okay, so x is and y.
So here take a such value, so that will fit in our graph. So we will say, okay, y is equal to, we will take a 12. So x you will get how much? You will get 24. Okay, and when you will take y value is 24, x value you will get how much? 12. Okay, hope you're getting. Now we will draw the graph first thing. So now you got the both solution equation set. Now we have to draw the graph. So we will draw the graph in the fresh one because the graph will come bigger one. Okay, so we will draw the graph. Okay, so we will say this is your y-axis, this is your x-axis. Okay, and make sure your graph will fit properly. So what we will do here, we will take a multiples of 4. So we will say 4, 8, 12, 16, 20, 24, and this one we can extend more. Okay, so this will extend more. So it can get here 24, 28 and 32. And this is your x. Now here also you can take 4, 8, 12, 16, 20, 24 and 28. And this is your negative x-axis, x dash. So you can here also take minus 4, minus 8, minus 12, minus 16, minus 20, minus 24 and minus 28. And this is your y dash. So here you have a negative y-axis, so negative 4, negative 8, negative 6, negative 12, negative 16, negative 20 and negative 24. Okay, now we will draw the graph one by one. Okay, so first solution set, if I will talk about, so what is our first solution set? 4, 0, which means y is equal to 4, x is equal to 0. So which means this is a solution set. Okay, now second solution set, we will say 0, minus 4. So x is 0, y is equal to minus 4. So which means this is a solution set. Okay, now you can draw the second one. We will take a second solution sets. Okay, so second solution, x is given 24, y is 12. So x is equal to 24, so 24 and y is equal to 12. So which means it will become somewhere here, this point. Okay, so this is the point. Okay, now second solution set, you can see what you have given. X is equal to 12, y is equal to 24. So just opposite. So this is 12 and y you have getting 24, which means here this is the point. Now you can pass this line properly. Now draw, you can pass this line properly. Okay, now after that, this is your first equation line. Okay, now take the second equation line. So here you have to draw them properly with the help of ruler. So you can say, so you will getting like this. Okay, so which means they are meeting at which point? You can say this is the somewhere 12, 20 and this is coming 16. Okay, so you can say this one is, you have 20 and 16. Okay, so which means length is equal to, here length is equal to 20 and width is equal to how much? 16.
Hope you're getting this solution. So this way we will solve by the graphical method, and when you will draw in the graph paper with the help of ruler, जब आप बनाओगे तो आपको better graph मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ फ्री हैंड पे बनाया हूँ तो आपको प्रोसेस के समझाने के लिए, but you can draw in the free hand. Okay, hope you are clear. Now coming with the next question. Next question, it is saying, given the linear equation, that is 2x plus 3y minus 8, write another linear equation in two variables such that geometrical representation so be found. Means here one equation you have to given, so another equation you have to write, so the geometrical equation will come. Okay, so let me solve the first one. So first one for intersecting lines. Okay, so first we will understand what is an intersecting line. So in that one, a1 over a2 is not equal to b1 over b2. Okay, so we have to make a such equation so there a2 and a1 are not equal, ratio will not come equal to b1 over b2. So what is our first equation we have given? 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. So we have to make in such a way so their ratio will not come. So we can write anything, 5x plus 7y minus 9 is equal to 0. So you can say now if you find their ratio, so a1 over a2 is coming how much? 2 over 5, and same way b1 over b2, if you find how much you will get, 3 over 7. So you can say based on this one, a1 over a2 is not equal to b1 over b2, not equal, so which means it is a forming a intersecting line. Hope you have clear how you have to make. Now coming about the second one. Okay, so second one is saying parallel lines. Okay, so let me say how we can find a parallel lines. So parallel lines basically a1 over a2 is equal to b1 over b2 and not equal to c1 over c2. Okay, so one equation you have given, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Second equation we can write here, 4x plus, here we can write double, so 6y minus 10 is equal to 0. So now you can check that a1 over a2 is coming 2 over 4, that is 1 over 2, and b1 over b2 is coming how much? 3 over 6, so it is coming also 1 over 2, and c1 over c2 you are getting how much? Minus 8 over minus 10, so 8 over 10. Okay, so you can say based on that we can say here a1 over a2 is equal to b1 over b2 but not equal to c1 over c2. Hope you have clear with the third one. Okay, now last one, coincident. Coincident, you remember that is all are coming equal. Okay, so make sure you have to follow that one. So a1 over a2 is equal to c1 over b1, sorry, b1 over b2 is equal to c1 over c2. तो हमें इसी के बेसिस पे लाइन लिखना है. तो हमारा फर्स्ट लाइन क्या है? 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. तो हमने इसको क्या किया? लिख दिया. Okay, we will say same equation भी लिख सकते हैं, 2x plus 3y minus 8, या आप इसको चाहे तो थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हो. तो मैं डबल करके लिख देता हूँ, जो कि सारा क्या रेशियो 1 over 2 आ जाए. तो 4x plus 6y minus 16 over 0. तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, a1 over a2 is equal to 1 over 2 over 4. So you will get what? 1 over 2. Same way, you will find b1 over b2 ratio 3 over 6. So you will get what? 1 over 2. And last, c1 over c2, if you find, you will get minus 8 over
16. So you will get 1 over 2. So you can say here in this one, A1, here you have got all the ratio are equal. So we can say this one, A1 over A2 is equal to what? B1 over B2 is equal to C1 over C2. So which means it is forming a coincident line. Hope you have clear with this one. Okay, so this way you can get a question also in board examination. So make sure you will make the base, and there is infinite equation you can make based on that. Okay, now coming with last question of this exercise. So question क्या बोल रहा है हमारा कि draw the graph of the equation x minus 1 plus 1 is equal to 0. And second one, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by this line and the x-axis, and thus set the triangular region. So basically, you have given the two equation. With the help of graphical method, you have to first find the solution sets. Okay, so we will say here, first equation, x minus 1 plus 1 is equal to 0. This is your first equation. So first one we can solve and we can say, okay, y is equal to, you got what? 1 plus x. Okay, so first we will draw the solution set. Okay, two solution set minimum. ओके, मिनिमम आप 2 बनाओ और मैक्सिमम आप 3 से 4 तक बना सकते हो. ठीक है, तो x y, तो मैंने आपको ट्रिक्स भी बताए हुए लीनियर इक्वेशन चैप्टर में. जब आप दो सॉल्यूशन बनाते हो तो कैसे आपको दो सॉल्यूशन बनाने और कैसे आप उसको यूज कर सकते हो. वैसे आप बिना ट्रिक का 3-4 बना सकते हो, दैट इज डिपेंड अपॉन यू. ओके, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन दिया है, तो सबसे पहले हम x का वैल्यू 0 लेंगे, तो y हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. x का वैल्यू -1 लेंगे, y हमारा क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा. दैट इज अ फर्स्ट सॉल्यूशन सेट. नाउ सेकेंड इक्वेशन हम लेते हैं, 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. सो वी कैन से, हे 3x इज इक्वल टू -12, ये -12 आपका ट्रांसपोज हो जाएगा upper another side, so it will become 12 and minus 2y. Okay, so x is equal to, you can say 12 minus 2y over 2. ठीक है, ये हमारा अब हम सेकेंड सॉल्यूशन सेट लेते हैं. सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या दिया है? 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. तो सबसे पहले हम 12 को ट्रांसपोज करते हैं और साथ में 2y को भी. ठीक है, तो आप ट्रांसपोज करोगे, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए. सो 3x इज इक्वल टू 12, -12 ट्रांसपोज हो गया तो +12 हो गया, और +2y ट्रांसपोज हो गया तो -2y हो गया. ओके, नाउ x, so 3 is multiplying, so it will be go transpose divide. So you can say 2l minus 2y over 3. ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे. अगेन मैं दो ही सॉल्यूशन सेट लूंगा जिससे हमारा काम आसानी से हो जाए. ठीक है, नाउ सो सबसे पहले x फिर y. ठीक है, तो अब देखो, अगर हमने y का वैल्यू अगर 0 लिया तो y का वैल्यू 0 लेंगे तो 12 over 3 बचेगा, विच मीन्स x का वैल्यू 4 आ जाएगा. ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 6 लेंगे तो y का वैल्यू 12 minus 12, so 0, so x का वैल्यू 0 आ जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ. तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ को के चीजों सारे पॉइंट को प्लॉट करते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी, वी विल प्लॉट ईच पॉइंट प्रॉपरली. ओके, और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आने का चांस बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है. सो मेक श्योर आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देखो. ठीक है, सो यू कैन से दिस इज x एंड x डैश, y एंड y डैश. ठीक है, नाउ वी विल मार्क हियर पॉइंट 1 2 3
4, 5. Then same way, negative x-axis, -1, -2, -3, -4, and -5. Now y-axis, 1, 2, 3, 4, 5. Now negative y-axis, -1, -2, -3, -4, and -5. Okay, now you got this one. Okay, now after all this thing, what is our things? To plot the graph. Okay, so हम लोग एक एक करके प्लॉट करते हैं. तो फर्स्ट सॉल्यूशन सेट में हमारा 0,1 आया, which means x value is 0, y value is 1. So it will be come here somewhere. Okay, this is a point. Now second one, you got -1, 0. So which means x का value -1 और y का value 0. ठीक है? Now if you want, you can draw the line of this one. So this you will get extended line, or we will draw all the line at last. Okay, first we will plot both the graph. Okay, now second one, you can get x 4, y is 0. So x is 4. So which means here this is a point. Now second one, x is 0, y is 6. So we have not marked here 6. So I will fix a 6 here. So first one, we will draw here 6. Okay, so this one you got y. Okay, so here you will get, this is a point. Okay, now we will draw the line of this two. Okay, so make sure you will use the proper ruler to get this one, because I'm not able to draw with the ruler in this free hand. तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप रूलर यूज करना. ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट आ गया. अब सेकेंड हमें इसको ज्वाइन करना है. ठीक है, तो सेकेंड को हमने ऐसे so you can get graph like this. Okay, this is the second equation. Okay, तो जब आप दोनों को प्रॉपर ज्वाइन करोगे तो ये एक फिक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं आपको जस्ट लाइक अ रैंडम में आंसर लिख दे रहा हूँ. दिस इज द पॉइंट. सो इफ यू सी, दिस इज कमिंग 2 and this is coming somewhere 3. So you can say this is 2, 3. Okay, now after that it is said that set the area. We have to set the area. So we will set the triangle area. Okay, so this is your triangle is forming. Okay, so we have set the triangle area. Okay, so this is a triangle you have get formed. Okay, yeah. Now after that, so this is the point you have got it. Now after, so it is saying here, so what is the intersection point? You will get 3. And what is the, here it is saying triangle formed by this line and the x-axis and the set the region. So x-axis here, what are the x-axis you will get here? X-axis, you can say first x-axis you will get -1, 0. This is the your first x-axis. Okay, and second x-axis you got what? 4, 0, which means this one. Okay, so hope you have clear with this one and all the question. Okay, so if you have any doubt regarding this chapter, so you can reach us to our Telegram channel, so we can help you. Okay, so this chapter is your first exercise of pair of linear equation. So coming class you will get a second exercise where we will deal with the substitution method of the pair of linear equation of NCERT 2025 and 26 solution. So make sure you will subscribe our channel so you will get a notification of our second exercise video. Okay, and please don't forget
to subscribe to this channel and share with your friend. And also you can see the scan code of our Telegram channel is given. If you have any question, anything you want extra, so you can message us, so we can help you. साथ में आप यहाँ पे WhatsApp का आपको आइकन दिख रहा है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, जिससे क्या हो कि आपको हमारे वीडियोस का रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे. ओके, सो प्लीज support us and share with your friends so we can help the maximum number of student. Okay, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में आपके लिए अच्छा लगता है, और जो हमें अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपको भी अच्छा लग रहा है, और आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जिससे हमें उनकी हेल्प कर पाए. ठीक है. सो अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई सजेशन हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमें बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में. ठीक है, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी. ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द एक्सरसाइज 3.2 of the pair of linear equation. So till now, watch the video and learn more, achieve more with the Learnwizz. Okay.